Par le CP. Vous allez venir vous ranger juste devant moi là. Sakina Ali Mahomet. Bienvenue Sakina. Je te range là. Voilà. Zaina Kassim Banji. Attends, comment t'appelles? C'est toi Zaina? Voilà, je te range derrière. Non, toi. Voilà, vers moi. Là, ici. Ensuite, Amourina Dilavor Karim. Réhan Hassan Ali. Sayada Issouf Ali. Ali Karim. Sayada Mahmoud. Hussein Mahmoud Ali. Najma Rizwan Hussein. Voilà, bienvenue les enfants, bienvenue au CP. Merci les parents de CP. On se revoit à 11h. Vos enfants sont de bonnes mains, je peux vous les garantir. Et on se revoit tout à l'heure. On y va. Castel Anaël. Écoutez, Castel Anaël. on te l'appelle là. Fazar Ali Hadi. Goulam Houssen Kazmein. Goulam Houssen Taïra. Mahmoud Ali Mitabas. Mahmoud Ali Shan Mahmoud. Molou Soumaya. Ali Ouna. Amir Ali Réhan Abbas. Asghar Ali Sakina. Damsilada Junaid. Jafar Ali Eda. Dungar Zoya. Issouf Ali Samana. Mahmoud Sarah. Mahmoud Hussein Kenza. Mbaye Jean Ilian. Nafarali Moïse. Nassan Mayal. Sabour Ali Badia. Allez, CE2, on y va? Merci, bonne journée. Alors bonjour, ça c'est les élèves pour le CM1 s'il vous plaît. Donc mademoiselle Koulsoum, monsieur Zeyn, monsieur Camille, mademoiselle Sania, mademoiselle Sakina Kassamali, mademoiselle Ayman, mademoiselle Sabira, mademoiselle Zeynab, mademoiselle Shahnaz, je ne connais pas, non, en plus, mademoiselle Fatima, monsieur Naïm, mademoiselle Nargis,
et mademoiselle Kenza. On est parti. Peut-être ça va être Chanaz. C'est la classe des grands. CM2. Akbar Ali Fezan. Ali Hussein Sakina. Elle est pas là? Elle a maillot. Comment? Elle a maillot. Ah, d'accord. Asgarli Ali Akbar. Asik Hussein Ali Sajjad. Ghulam Hussein Zoa. Hassan Maïssa. Hassan Ali Zara. Mahmoud Ali Jawad. Mahmoud Ali Soira ou Saïra? Fatima. Comment? Sakina? Sakina, c'est qui? Elle n'est pas là. Ah ben, deux absents. Voilà. Mahmoud, Maria. Pirali Azmat. Eh ben alors, c'est bon pour SM2, hein? Rajabali Chayan. Il est pas là. Ah ben, 4 absents. je fais grave alors. Ah, c'est pas vrai ça. Tejani Taïra. Et toi, j'ai pas dit ton nom? Tu sais comment? Maïra. J'ai sauté, mais Maïra. Voilà. Bon, ben, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. आपके दरबार सा दरबार कहाँ? आपके दरबार सा दरबार कहाँ? आपके दरबार सा दरबार कहाँ? जिसको काबा भी कहे, जिसको काबा भी कहे, काबा वो शहकार कहाँ? जाली 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 सा दरबार कहाँ? जाली आपके दरबार सा दरबार कहाँ? कब किसी और के दरबार का यूं राज हुआ? दर तेरा नबियों के दरबारों का सरताज हुआ। नबियों के दरबारों का सरताज हुआ। सारे दरबारों के सरदार सा सरदार कहाँ? जाली आपके दरबार सा दरबार कहाँ? जाली 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 आपके दरबार सा दरबार कहाँ? जाली आपके दरबार सा दरबार कहाँ? इनकी हद अर्श के दरबार से जा मिलती है। इनकी हद आलम अनवार से जा मिलती है। इनकी हद आलम अनवार से जा मिलती है। आपके रोज़े के मीनारों से मीनार कहाँ? आपके दरबार सा दरबार कहाँ? जाली 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 आपके दरबार सा दरबार कहाँ? जाली आपके दरबार सा दरबार कहाँ? रोशनी को भी यहाँ नूर अता होता है। नूर काबा भी यहाँ आके फिदा होता है। नूर काबा भी यहाँ आके फिदा होता है। आपके रोज़े के अनवार से अनवार कहाँ? जाली आपके दरबार सा दरबार कहाँ? जाली 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 आपके दरबार सा दरबार कहाँ? जाली आपके
दरबार सा दरबार कहाँ। इसकी ऊंचाई में सब आलम अनवार भी है। इसके हर पेच में तौहीद के असरार भी है। इसके हर पेच में तौहीद के असरार भी है। जाली आपकी दस्तार सी दस्तार कहाँ। जाली आपके दरबार सा दरबार कहाँ। जाली 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 आपके दरबार सा दरबार कहाँ। जाली आपके दरबार सा दरबार कहाँ। कुर्सियों ने भी इसे माना है नूरी पैकर। मिस्ल कुरान उतारी है खुदा ने तुम पर। मिस्ल कुरान उतारी है खुदा ने तुम पर। जाली आपकी तलवार सी तलवार कहाँ। जाली आपके दरबार सा दरबार कहाँ। जाली 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 आपके दरबार सा दरबार कहाँ। जाली आपके दरबार सा दरबार कहाँ। जब चले तो पर जिब्रील पे आकर ठहरे। दो जहां की जो इबादत से बेहतर ठहरे। दो जहां की जो इबादत से बेहतर ठहरे। ए मेरे मौला तेरे वार सा है वार कहाँ। जाली आपके दरबार सा दरबार कहाँ। जाली 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 आपके दरबार सा दरबार कहाँ। जाली आपके दरबार सा दरबार कहाँ। आप बोले तो ये लगता है कि रब बोला है। कभी लगता है कि कुरान ने लब खोला है। लगता है कि कुरान ने लब खोला है। जाली आपकी गुफ्तार से गुफ्तार कहाँ। जाली आपके दरबार सा दरबार कहाँ। जाली 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 आपके दरबार सा दरबार कहाँ। जाली आपके दरबार सा दरबार कहाँ। सजदाए इश्क तेरे दर पे अदा करता है। तेरे ही इश्क में सूली पे सना करता है। तेरे ही इश्क में सूली पे सना करता है। मेरे मौला तेरे हुबदार सा हुबदार कहाँ। जाली आपके दरबार सा दरबार कहाँ। जाली 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 आपके दरबार सा दरबार कहाँ। जाली आपके दरबार सा दरबार कहाँ। हो गई है तेरी मकबूल दुआ नूर अली। खास दरबार अली की है अता नूर अली। दरबार अली की है अता नूर अली। वरना तुझ जैसा कहाँ और ये अशआर कहाँ। जाली आपके दरबार सा दरबार कहाँ। जाली 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 आपके दरबार सा दरबार कहाँ। जाली आपके दरबार सा दरबार कहाँ। जाली 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 आपके दरबार सा दरबार कहाँ। जाली आपके दरबार सा दरबार कहाँ। जाली आपके दरबार सा दरबार कहाँ। जिसको काबा भी कहे, जिसको काबा भी कहे, काबा वो
शहकार कहाँ जाली 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 कब किसी और के दरबार का यूं राज हुआ दर तेरा नबियों के दरबारों का सरताज हुआ नबियों के दरबारों का सरताज हुआ सारे दरबारों के सरदार सा सरदार कहाँ जाली 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 बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। C'est une agréable tradition pour les parents et responsables des écoles de se retrouver durant la rentrée des classes pour justement associer les attentes et les convictions que leur animent le début d'une nouvelle année scolaire. Je voudrais avant tout que nous ayons une pensée pour nos êtres chers qui ne sont plus parmi nous, mais qui directement ou indirectement ont œuvré à l'édification de cette communauté. Je souhaiterais pour cela que l'on récite un salawat en leur faveur. Merci. Mesdames, Messieurs, chers professeurs et élèves, au nom du président de l'UACSIR et la commission de tutelle de l'enseignement, je vous souhaite à toutes et à tous, parents, enseignants et élèves, la bienvenue à l'école primaire La Cité du Savoir pour cette nouvelle année scolaire 2016-2017. Une rentrée scolaire, c'est l'occasion de rappeler que le rôle de l'école est de forger nos enfants pour en faire des citoyens de demain, capables d'améliorer notre société vers ce qu'il y a de meilleur. Voilà ce que nous attendons de vous, les enfants. Depuis son ouverture en août 2013, l'école La Cité du Savoir a beaucoup grandi grâce à l'apport de vous tous ici présents. Nous devons continuer à contribuer chacun à son niveau. Ainsi, je demanderai aux enseignants de laisser exprimer aux enfants leur génie et leur créativité. Et j'en appellerai au sens de la responsabilité des parents d'élèves en s'impliquant davantage dans l'éducation et la formation de leurs enfants tout au long de l'année scolaire à venir. Que cette nouvelle année, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et nos 14 Ma'soumine alayhimus salam, soit riche en savoir pour les élèves et riche en satisfaction pour notre équipe pédagogique et les parents. Pour démarrer cette nouvelle année sous la bénédiction de l'imam du temps, nous réciterons un petit doigt. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kulli waliyakal hujjat ibn al-Ghassan salawatuka alayhi wa ala abaih في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. Salawat. Pour terminer, je vous rappellerai que l'éducation reste la priorité de l'UACSIR et que l'ouverture du collège La Cité du Savoir par la classe de 6e est prévue demain au 85 chemin Finette à partir de 8h30, Inch'Allah. Merci, je vous remercie de m'avoir écouté si attentivement. Je vais passer la parole à Madame Elisabeth, notre directrice, qui vous livrera les consignes pour cette nouvelle année scolaire. Nous prenons cette 5e année avec une année de
vous savez, il y a un petit peu de réforme dans l'enseignement, quoi. Donc, je vous invite dès ce soir à prendre connaissance, je le dis en priorité, à prendre connaissance des 2 mots qu'on va mettre dans les cahiers des enfants. Notamment les nouveaux horaires, vu que la semaine de 4 jours et demi, comme on avait l'habitude le samedi, l'année précédente de le faire, maintenant, le samedi, le week-end est complètement libéré et nous passons au mercredi. Alors le mercredi, nous travaillerons 3 heures, c'est-à-dire aujourd'hui, à commencer aujourd'hui, de 8 heures à 11 heures. D'accord? Donc, ce sera affiché, les nouveaux horaires seront affichés dans les cahiers des enfants. Alors, je précise aussi que tous les matins, nous commençons à 8 heures pour finir l'après-midi avec un petit quart d'heure de moins, c'est-à-dire 14h45. Ensuite, bon, après je vais préciser que, je le dis maintenant, les cours de Coran reprennent dès demain. C'est ce qu'on m'a assuré hier. Dès demain, jeudi. Alors, c'est-à-dire que les cours de Coran auront lieu le lundi, le mardi et le jeudi, de 15h à 15h30. C'est-à-dire les classes se terminent à 14h45 pour nous. On laisse un petit quart d'heure aux enfants, le temps de se rafraîchir, de reprendre un petit peu, de se restaurer. Et les cours de Coran commencent de 15h à 15h30 pour ceux qui vont les suivre. La 5e année, là nous attaquons la dernière année d'expérience, de tout ça. Donc là maintenant, c'est vraiment, il faut y aller et se mettre au travail, non seulement les professeurs renforcés, mais surtout les parents et les enfants aussi. Merci de votre écoute et de votre compréhension. Et je pense que nous pouvons aller bien loin. Je dirais pas très loin, mais je dirais bien loin. D'accord? Alors là, maintenant, on va procéder à l'appel des élèves par classe, par niveau, bien sûr, CP, CE1, CE2, CM1, CM2. Bon, les enfants qui nous connaissent déjà, ils savent vers quel professeur se diriger, mais on va le faire dans les règles, comme ça se passe partout. On va faire l'appel des enfants et au fur et à mesure, les enfants, ils vont monter avec leur professeur et plus avec les parents. D'accord? Voilà, merci encore et vous serez toujours les bienvenus. Jali,